Hello, hello, hello. Hello, hello.
हेलो, 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 हेलो। तो क्या आई एम ऑडिबल? Okay, sorry for the issue. Now we can start with our project. Okay, so this is your interface. So I will start from new. Just close it. So when you open the SolidWorks software now, you will be able to see that. Okay, okay. So we are starting here. Just go for this icon. Look for this icon. This is home. Okay. जिस पे इस पे आप क्लिक करेंगे देन यू विल हैव दिस काइंड ऑफ विंडो। इसमें आपको क्या पूछता है सॉफ्टवेयर आपको कि आपको पार्ट बनाना है, असेंबली बनाना है और ड्राइंग बनाना है। हमको अभी चेसिस बनाना है, देन वी कैन गो फॉर पार्ट। ओके, सो सी यहाँ पर हम पार्ट में आ गए, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग 3D फीचर्स आपको मिलते हैं, इनका यूज करके आप क्या करते हो, डिजाइन क्रिएट करते हो, राइट। सो आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट सेलेक्ट द प्लेन एंड स्केच। ओके, कोई भी एक प्लेन आप सेलेक्ट करेंगे और वहां पर क्या करेंगे, स्केच करेंगे। जैसे मैंने किया यहाँ पर फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्केच करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्केच करूंगा। ठीक है, हमको क्या बनाना है, चेसिस बनानी है। तो क्या करेंगे, एक नॉर्मल मॉडल्स आप बना सकते हो, बट इसका इंडस्ट्रियल जो मेथड है वो बताऊंगा मैं आपको बाय यूजिंग पॉइंट्स। ओके, सपोज इफ यू वांट टू create a chassis like this, then you can create, right। आप एक फ्रेम यहाँ पे बनाओगे, उसके बाद कॉपी फ्रेम यहाँ पर करोगे और देन विल कनेक्ट दैट, राइट। बट नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट, वी आर गोइंग फॉर द डिफरेंट मेथड। ओके, सबसे आसान मेथड से जाएंगे, तो उसमें आपका जो चेसिस है विद इन 5 मिनट्स आप उसमें बना सकते हो। ठीक है, तो उसका क्या मेथड है, we scan the 3D model, existing 3D model we scan and we get the XYZ coordinates। ओके, जो 3D मॉडल होता है हम उसको स्कैन करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके XYZ के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उनका क्या करेंगे, हम उनको कनेक्ट करेंगे और डायरेक्टली चेसिस में बना देंगे। ओके, सो हाउ टू इंपोर्ट दैट पॉइंट, फर्स्ट आप एग्जिट कर लेना यहाँ से। नाउ बिकम्स फ्रेश विंडो, राइट। जैसे आपके यहाँ पर फ्रेश विंडो है, आपको जाना है यहाँ पर एड इन्स ढूंढना है, सॉलिडवर्क्स एड इन। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, देन वी नीड टू ऑन दिस एड इन दैट इज कॉल्ड स्कैन टू 3D। ओके, स्कैन टू 3D। आफ्टर दैट व्हाट विल डू, जस्ट गो दिस फाइल ऑप्शन एंड ओपन। हमारे पास यहाँ पर क्या ओपन करना है, हमको पॉइंट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पॉइंट्स टू 3D, पॉइंट क्लाउड, राइट। स्कैन टू 3D में पॉइंट क्लाउड, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए या तो टेक्स्ट फाइल चाहिए, बेसिकली उसमें आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हो। ये मेथड आपका यूज करते हैं सारे जगहों पर जहां पर आपको कर्व्स क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, जहां पर आपको कर्व्स क्रिएट करने होते हैं वहां पर क्या क्रिएट करते हैं हम लोग, पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, देन विल कनेक्ट दैट। ओके, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन कर दिया हमने, तो सी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको विजिबल होंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स है यहाँ पर, तो इनको हमको कनेक्ट करना है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर इनको सबको कलेक्ट करना है। ठीक है, ये आपको विजिबल नहीं होगा, आई विल जस्ट चेंज द बैकग्राउंड सो दैट यू कैन सी दीज आर द पॉइंट्स। ओके, तो हमको इनको कनेक्ट करना है।
ओके, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग? सो एक यहाँ पर ठीक है, इसी को रहने देते हैं यहाँ पर। और क्या करना है, ये पॉइंट्स को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? बाय यूजिंग 3D स्केचिंग। ओके, 3D स्केचिंग का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। 3D स्केच कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन स्केच, यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, एंड देन 3D स्केच। अब सिंपली लाइन से इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे और ट्राई करेंगे इनको 3D में बनाने का। ठीक है, पहले आपको लाइन लेनी है, सिंपल लाइन लेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट है एक, तो इनको पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने, एंड देन विल स्केप। Okay, after that we will go for this line again and just select the points. Okay, जो भी पॉइंट्स आपको चाहिए यहाँ पर वो सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके पॉइंट्स चेक करेंगे। क्या होना चाहिए? ये प्लेन वाइज पॉइंट आएंगे यहाँ पर। ठीक है, स्किप नहीं करना है पॉइंट्स को, नहीं तो क्या होगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इफ यू नीड a good result then you need to create exact points. Okay, इस पॉइंट को ही टारगेट करना है, स्नैप करेगा वो ऑटोमेटिकली, तभी क्लिक करना है। So, यहाँ पर पॉइंट है, एंड एक पॉइंट यहाँ पे है। ओके, सो दिस टाइप का आपको यहाँ पर मॉडल मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो बचे हुए पॉइंट्स हैं इनको भी प्लॉट कर लेंगे सिंपली लाइंस में। लाइन, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, एंड एडिंग दिस पॉइंट्स, राइट। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको ऐड करना है। इस पॉइंट को यहाँ लाके ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अप्लाई लाइक दिस। एंड अब क्या करना है, इनके बीच में जैसे ये देख सकते हो आप, तो ये क्या है, एक हाफ पार्ट है, राइट हाफ है। तो वैसे ही आपको लेफ्ट हाफ चाहिए, बट लेफ्ट हाफ कब बनाऊंगा मैं? इसको कंप्लीट करने के बाद, व्हेन वी हैव अ 3D मॉडल देन विल कंप्लीटली मिरर इट। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि बार बार आप मिरर नहीं करोगे ना। ओके, तो यहाँ पर लाइंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इसको भी कनेक्ट कर देंगे पॉइंट को। ओके, इजी लगा इतना? अब यहाँ से करना है क्या है आपको, और नाउ वी हैव टू ऑप्शंस। पहले मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, बट आपका ज्योमेट्री कैसे अभी फिक्स नहीं है, तो इसको फिक्स करने के लिए वी हैव अ कंप्लीटली फिक्स पॉइंट ना कोऑर्डिनेट्स, देन वी नीड टू फिक्स द ज्योमेट्री आल्सो। अदरवाइज क्या होगा, ये मूव करेगी। इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया एंड देन सेलेक्टेड। ओके, यहाँ पर इसमें एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये अलोंग जेड में है पहले से और फिक्स भी है, तो दो ऑप्शन एक साथ नहीं कर पाएगी वो। ओके, तो इसको हमने रिजॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे बताओ? जो दूसरा चेसिस है आपका, दूसरा एलिमेंट्स, पहले इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे इसको बताओ? विल गो फॉर
spline, or we can go for weldment structure. Okay, if we go for structural members, you can create and optimize the design also. Okay, before that we need to modify the geometry, apply. देखो यहाँ पर sharp corners है. ओके, तो इन कॉर्नर्स को हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर फिलेट अप्लाई करो. फिलेट दिस पॉइंट्स, इंक्रीज सम dia here 150, apply as per your designs. ओके, जैसा भी आपको डिजाइन चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे. ओके, देन वी अप्लाइड हियर आल्सो. सी, तो एक स्मूथ पैटर्न आएगा आपके चेसिस में. ओके, तो ये हमको चाहिए होता है यहाँ पर. ये भी हो गया, यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर भी स्मूथ पैटर्न आएगा और इसको क्लिक करेंगे. ओके, इजी. नाउ वी हैव दिस काइंड ऑफ ज्योमेट्री हियर. अब क्या करना है हमें, पहले एक चीज और करते हैं. ये तो देखो, अगर इसको मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ तो यहाँ पर ये तो सही लग रहा है मुझे, बट ये पूरा स्ट्रेट नहीं है ना, तो इसको डिलीट करेंगे फिक्स ज्योमेट्री से. पहले फिलेट अप्लाई कर चुके हैं हम, इसको डिलीट करते हैं और इस रिलेशन को मैंने डिलीट किया. इसको फिक्स करेंगे अलोंग जेड अगेन, तो ये ऐसा दिखेगा. ठीक है, अगेन इसमें भी आपको यही करना है. तो आपका ज्योमेट्री स्मूथ आना चाहिए बस, दैट इज आवर एम. ठीक है, तो ये भी हो गया यहाँ पर. इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, अगेन जेड ज्योमेट्री डिलीट कर देंगे. ठीक है, तो सी, यहाँ पर अभी एक ब्यूटीफुल चेसिस आपको मिलती है. ये पार्ट भी आपको फिलेट करना है थोड़ा सा, तो फिलेट कर दो. यहाँ पे छोटा रेडियस लगेगा. विल गो फॉर 50 काइंड ऑफ थिंग. ओके, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर एडजस्ट को और सी, यहाँ पर अप्लाई करेंगे. देन अप्लाई दिस फिलेट ऑल्सो. ओके, और यहाँ पर भी एक फिलेट अप्लाई करते हैं. थोड़ा सा स्मूथ करना है बस आपको, दैट इज योर एम. ओके, so we designed here a scanned geometry. Okay, we exit here. Now we have two options. You can go for the structural members or you can go with the complete easy method that is called your swap base. Okay, we'll use a pipe for this chassis. Okay, at a 30 diameter or a 20 diameter. Okay, external diameter 20 and a thickness of 5 Okay, that means the inner dia will be 15 So we'll go for that. Say boss. Now we'll go for circular profiles. We have a sketch, but we don't have profile. So we'll go for circular profile for pipes. Okay. After that, right click here, go for the selection manager and select multiple. Select multiple as option so that you can select multiple lines as a single shape. Okay. So I'm selecting these options and select the objects here. So see, all of these are in the single way and having a same structure. So I am selecting in it one single go. Okay. So here, that's it. Here we'll end it. See, we'll create a pipe. But here is the thing, the major thing we need to talk about, because it is not hollow. It is a complete solid, right? So we need to make it hollow. How we can make it? Just go for edit. Now see, we don't have any options here to make it thin. So what we need to do? We need to apply again. Yes, go for sweep boss, circular profile, and now check this thin feature. Okay, give the dimension as 5 It will be directed like this. Okay, we'll again selecting the multiples. Okay, again selecting this member here and click
Okay, easy. Now we have an external diameter of 20. So we'll type it 20 here. So see, again, one thing we need to understand from where it is 20. Okay, so see, now it is 20 and adding a thickness inner side only. Okay, now the ID will be, here is the thickness 5. The ID will be 10, right? This 5 and this 5. The diameter of this inner dia hole is 10 mm. So we'll decrease the thickness about 2.5. So see, this will this will be the our required geometry. Okay, now we'll complete it. Done. Now we need the same sketch again, so we'll highlight as show. Now what we'll do, we'll just connect these lines here. Okay, again step boss, select multiple, circular profile. See, all of the input have been readily. See, if we don't select the select multiple now selection manager, then it will select the whole geometry, a single sketch. Okay, select multiple and apply from here. See what it, that's how it will deliver. Okay, that's how it will created here. See, the half of the geometry has been created. We need to add this kind of support here only. Okay, these three supports. We'll go for again shape, select your profile. Now the thing is you need to select it single handedly. If you go for the selection manager and select multiple and go for like this, it will not create because these lines are not connected. Okay, that's why it will not accept this kind of conditions. Okay, you need to select one and one only. Okay, one time this, what will the dimension 20, same. See here again, uh, both of the sizes are big changes, right? So that's why we need to check it again and again. Okay, we'll check this dimension, this shape, edit. We already applied thin, but it is 10 mm. We need 20 and inner side thickness. Okay, so it will come like this. Now we need to add all of these members here. Go for shape again, circular profile, thin body, and what will the dimension? 20, reverse, and this will be the option. Right click, selection managers, multiple, and select the single. Okay, so in default, we need to change the direction of this thickness. Click OK. See, it's easy. Again, what you need to do, add another member here, shape boss, circular profile. This will be my profile. Oh, sorry. Again, selection manager, multiple, and this will be the profile. Option fin feature on. Outer diameter is 20. See, we need to arrange the direction of the thickness. See, now you get a single body of your chassis. Okay, it is a single body. It is not a structural member. Okay, we are not using here weldments. We are using this sweep command. Okay, now what we need to do, first check the plane here, the front plane. See, all of the geometry has been mirrored, can be mirrored on this plane, right? So we'll go for mirror. By selecting this plane, it is getting already selected. Now we need to select the bodies only. See, we selected a single body because it is a single body. It will directly mirror it. Okay, done. Now we need
this pipe here, again go for shape, uh, go for circular profile, add it 25. Okay, 25, having a thickness of 3 both side. Okay, selecting with the selection manager, select multiple, all of this, select all this thing, apply. See, so here also we need to change the dimension like this. Done. So this will be your chassis, right? This can be your chassis element. Okay. Now what we'll do, we need to trim out this kind of sections here, right? We need only this section here. We don't need this interior part. If we see from here, you can see that this element is adding here, right? So what we need to, while mirroring this object, we'll go for don't merge my solids. Okay. So it will do, we'll have two bodies, right? So now it is, this pipe is already getting selected with this. So what we do, we'll create a multiple bodies here. Okay. After that, we'll combine that bodies. Okay, in a single, so that it will, this part will be trimmed out. Okay, how to trim these bodies? So again, this handlebar, right click, edit feature, select here only. So no bodies, select OK. Sorry, selected bodies, auto select. Mirror. Here this body should not connected with this. So here also we need to remove this merge result option. Okay. Okay, we are getting error here. So we'll make it connected again. Merge result, yes. Okay. So now we can proceed with this simulation part. How to do that? We'll directly go for simulation add-in and turn on this simulation. Okay. Go for simulation, run new study. We'll get a static one study here. Static structural study means no time is involved here. Okay. So now what we do? We'll just hold this bar here, this bodies. We'll apply fixtures as a fixed geometry. Okay, we'll apply this body as a fixed geometries and apply. See, these are the fixtures. It is added as a hinged. We need to fix that geometry. So we'll apply fixed. See now it is getting fixed here. So what we need to do, we'll apply the force on these sections in right side in X direction. Okay. In X direction, we do apply the force. Now external loads, uh, go for external loads here. Force apply on this section, give direction as a plane. Okay, or you can apply pressure also. Okay, so we'll go for pressure here.
pressure for this faces, this face, and need to give the directions. Because it is a cylindrical body, we cannot apply in a single direction. We need some reference point here. Okay, if we use this reference geometry, we'll apply this right plane. See, the geometry is applying in this direction only. So we'll go for delete and we'll apply front plane as a geometry. See, the force is applied in this direction now. So we'll click OK. Pressure, pressure is applied in this direction. Now we'll go for mesh, right click, create mesh. And now we need to select the propagation of your meshing. What will be the element size? Okay, if we go for chorus, it will not, we will not able to get the good results. If we go for this middle option here, in between of chorus and fine, so the processing time will be moderate. And if you go for the fine, the processing time will be long and you need to wait a little more. So what you need to do? Just make it a little chorus. Okay, little chorus, just little chorus now for as per the specification of your laptop. Okay, so it will done fast. See, the that's how your meshing has been done. Now we go for run this study. Okay, so we didn't apply the material. We go for here, uh, material, or you can go with the model and apply your material. Right click, edit material. Apply this as a stainless steel here, or you can use ANSI 4130. Okay, 4130 annealed, applied, apply, close. And now we'll go for static structural. The material has been applied now. Now we'll solve this study. So it is solving. See the things you will get. Stress one myself. We'll double click and see the result. Okay. Now the SolidWorks is reminding us to save our design. We are not saving now. Okay. So this is your stress, displacement of the body, how the deformation happens in the body. That is your displacement, strain one, and displacement again. Okay. If you want to see the animation of that, so where you want to go, just click your study, right click, first double click, right click, and your animate. So now your body will be animated here. Okay. So that's how you can do the static structural analysis of any component. Okay. The thing you need to remember is just fix your geometry, apply the material to it, mesh it, apply boundary conditions, and get your results. Okay. If you want it slow, you can slow. If you want it very fast, you can see it is very fast. Okay. It is not dependent on the time. So you can continue the study on the time as 0 or 1. Okay. Completed. Here, if you want to show the strain, just right click and animate. See, the textual changes need to appear on this corner and edges. Okay. Easy. That's how you conclude it. Okay. Thank you. Thank you for joining everyone. Hope you like this session. If you liked it, you can connect me on WhatsApp
for the future updates, and just like the YouTube channel, like this video, subscribe the YouTube channel, and thank you.